अरे भाई लेट वाली बात नहीं है। बात दरअसल यूँ है कि मुझे ना हो रही है खांसी, मेरी खांसी जा नहीं रही है। और मेरी खांसी नहीं जा रही ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है ना। तो मैं उठा हुआ हूँ सुबह 9 बजे का। सुबह 9 बजे से उठा हुआ हूँ, है ना। आने को जल्दी भी आ सकता था स्ट्रीम पे, फिर मैं आया ही नहीं। मैंने कहा यार बाद में करूँगा, है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो खा रहा हूँ ना उसकी वजह से मेरा गला इरिटेट हो रहा है बार बार। इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अभी क्या करें, इंडिया के सारे खानों के अंदर मसाले वसाले सारे भरे पड़े हैं, है ना। आर्कन क्वेस्ट कैसा लगा भाई? दिमाग ख़राब हो गया हमारा तो। टू गुड। तो भाई हमारे खानों में इतने मसाले भरे पड़े हैं कि हम क्या करें, खाना छोड़ दें। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं खाना थोड़ा कम खाऊंगा। जैसे कि मैंने अब तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, मैं सुबह का उठा हुआ हूँ। और मैं शायद अब सीधा शाम को या रात को ही खाना खाऊं, मोस्ट प्रॉबेबली, है ना। दोपहर को शायद कोई सैंडविच वगैरह बना के खा लूँ, बट दैट्स इट। मसाले वसाले नहीं खाऊंगा यार। खांस खांस के पता है गले में दर्द कम, सर में दर्द ज़्यादा हो जाता है। और कौन को मैंने कल रात को दोबारा देखा बैठ के। एक वो है ना, यूट्यूबर है थ्योरिस्ट, वो प्ले कर रही थी। पूरी की पूरी क्वेस्ट मैंने दोबारा देखी, आर्कन क्वेस्ट की। दो चार चीज़ें मुझे हजम नहीं हुई, समझ नहीं आई, है ना। लेकिन देखते हैं आगे किस तरीके से अनफोल्ड होती है। आज चैलेंज कंप्लीट करोगे? अच्छा वो वर्जन ट्रेलर वाला, हाँ यार वर्जन ट्रेलर देख लेते हैं। आज दिया का जो वो है स्टोरी क्वेस्ट है वो भी करना है। तो पहले दिया का स्टोरी क्वेस्ट करते हैं फिनिश, उसके बाद वर्जन ट्रेलर जो बाकी के बचे हैं वो देखेंगे। इतनी सारी विक्स रख के बैठा हूँ आज, एक एक गोली खाता रहूँगा। प्लीज़ पहले हैंग आउट कर लो। हैंग आउट तो उसका है ना, फारूजान का है। बाकी गाइज अगर तुम्हें हो सकता ना पता हो तो जो जेट की स्टोरी थी ना, जो पीछे जेट की स्टोरी थी उसका कुछ पार्ट भी रह गया है। जैसे कि वाली है ना, रिजॉइस विद मी फॉर व्हाट वाज लॉस्ट इज नाउ फाउंड। ये जेट की स्टोरी जो भी कंप्लीट नहीं हुई है। आई एम क्यूरियस फारूजान 100 ईयर्स की क्यों है। चलो पहले हैंग आउट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये कंप्लीट करना है क्योंकि मैं ये स्टोरी पूरी करना चाहता हूँ, ये बीच में रह गई थी। W की जगह क्यों दबा दिया मैंने? Follow the wind. हाँ हाँ हाँ। हग्गू मोमेंट मतलब अच्छा हैंग आउट।
नहीं, क्वेस्ट तो फिलर है, लेकिन ये फिलर क्वेस्ट ही बहुत ज़रूरी होती है। ओए डन। अभी जस्ट की क्वेस्ट पूरी नहीं हुई है, अभी बाकी है। अभी बाकी है। ये देखो आ गया ना नीचे। इसे क्वेस्ट ले लेते हैं, फिर डेली कमीशन करते हैं। हाँ यार, इनको इतना पैसा इन्होंने कमा लिया है, ये सारी वॉइस क्यों नहीं करते? चलो पहले अपन अब डेली कमीशन करते हैं। Come on out. Show them. अरे इतने कोने में क्या रखी है बे क्वेस्ट एक? आज दोनों निपटा देते हैं, फारूजान की क्वेस्ट भी कर देते हैं और दिया की स्टोरी क्वेस्ट भी कर देते हैं। That was a long time ago. नेविगेट। एंड अबिस भी, हाँ अबिस भी करना है, यस। वीडियो पे रिएक्ट करते हुए कॉपीराइट नहीं आता क्योंकि गेंशिन का जो मोस्टली म्यूज़िक है वो सारा कॉपीराइट फ्री है, क्योंकि गेम के अंदर इतना म्यूज़िक बचता है। अगर इन पे कॉपीराइट आने लगा तो फिर लोग गेम ही नहीं खेल पाएंगे, अगर उनकी हर वीडियो पे कॉपीराइट आने लगा तो गेंशिन ने अपना म्यूज़िक जो है वो कॉपीराइट फ्री रखा हुआ है। Come on out. Right here, right now. Scatter! Emerge. Right here, Germinate! right now. और साथ साथ मुझे वो भी करना है, डीप वुड मेमोरीज वाला जो डोमेन है ट्रैवलर का, वो भी करना है, क्योंकि कल मैं करना भूल गया था उसको। रेजिन कंडेंस कर लिया कल मैंने, लेकिन मैं डोमेन करना भूल गया।
Right here, right now. Emerge. Into the wind. ट्रांसपोर्ट बलून, वाह। चलो ये ट्रांसपोर्ट बलून को लेके जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से फिनिश करके ना ये सारी की सारी क्वेस्ट वगैरह गॉड ऑफ वॉर भी अभी खेल लूँ। Right now. Emerge. Scatter! One with nature. मैंने आज 11 फ्लोर कर दिया और 204 पुल जमा हो गए हैं। यार तुम्हें 204 तो बहुत सही हैं। मेरे पास अभी भी 100 के अराउंड ही हैं। एक 5 स्टार पक्का है। डन सारी रहेगी कोई? डन। आपने 2 ड्रैगन, 1 आर्कॉन, 3 फटुई हार्बिंजर, 2 सी मॉन्स्टर को हराया है। मैंने? अच्छा। करना अच्छा नहीं लगता, करना पड़ता है ना। क्वेस्ट तो क्वेस्ट ही है कि नहीं? Add Astra. Thank you for Add Astra Abyss. हेलो भाई टीटीजी गेम। मुझे सनहेयर में स्प्लिटर भी चाहिए। सबको चाहिए भाई। ओके ये हो गया। अब डोमेन डीप वुड, लेट्स गो। कल के कंडेंस रेजिन भी पड़े हैं, आज के रेजिन भी सारे के सारे हैं, तो ये पूरे करने हैं। स्टार्ट। Right here. Emerge. Into the wind.
Right here. I'm getting sick of this game. Now you're testing Nothing my lasts patience. forever. Fine. One with nature. Will meet. अबे Stay focused. मर कैसे नहीं रहे बे? Be still. मैंडर पावर हो गया क्या? कमाल है भाई। अर्ना रिक्वेस्ट खत्म कर दी, इतनी खुशी हो रही है। तुम्हें लग रहा है कि तुमने अर्ना रिक्वेस्ट खत्म कर दी, पर अभी अर्ना रिक्वेस्ट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो अर्नारा की किताब है ना, उसमें तुम जाके देखोगे तो बहुत सारे क्वेस्ट ऐसी है जिन पे भी टिक मार्क नहीं लगा होगा। अपनी किताब खुलो अर्नारा वाली और देखो उसमें कितने पर टिक मार्क लगा है, फिर बताना। काजुआ मरने वाला है मेरा काजुआ मरने वाला बेचारा। Show them right now. Stay focused. Fallen leaves. Adorn my night. The wind knows me. Now you're testing my patience. घटिया पीस मेरे को सारे पीस ऐसे मिलते हैं भाई। ER HP Right here. One with nature. Be still. Come on out. Emerge. Right now. Dear me. So many regrets. ये बफ कर दिया क्या इनको हैं? ये सारे बफ हो गए क्या? मार बहुत रहे हैं यार ये तो। भाई जब तक तुम्हारी आर की बुक में सारे टिक नहीं लगे होंगे तब तक तुम्हारी आर रिक्वेस्ट खत्म नहीं हुई है टेक्निकली। क्या आर्टिफैक्ट आ रहे हैं, वाह। गुड मॉर्निंग लाइफ ऑफ ए विनर भाई, गुड मॉर्निंग। तुम्हें अगर अपनी आर्ना रिक्वेस्ट सच्ची में ख़त्म करनी है तो तुम्हें वो किताब पे लगे हुए टिक ख़त्म करने पड़ेंगे। जब तक नहीं होंगे तब तक हम नहीं मानते कि तुम्हारी आर्ना रिक्वेस्ट ख़त्म हुई है। भाई I got 2 Bennett in first 10 pull। क्या बात है। टिक हुए हो या नहीं क्या फर्क पड़ता है आर्कन भाई? भाई फर्क पड़ता है ना, वही तो आर्ना रिक्वेस्ट है। That is what Arnara quest is all about. Know my sword. Rain outlines your fate. Rain cutter. Let's light it up. Teamwork is strength. Now you're testing my Inazuma shines patience. eternal. I'm
सिल्क फ्लावर एंड ग्लेज लिली सेल करने वाले एनपीसी को मिले हो? नहीं, कहाँ पर है? क्या घटिया आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं यार। अबे कंटिन्यू क्यों कर दिया? रेजिन कंडेंस करना था। रुक जाओ, आई हैव टू कंडेंस द रेजिन। हिडन क्वेस्ट में प्रीमोस मिलते हैं, तो बताओ कौन आ रहा है मुझे उस एनपीसी के पास लेके जाने के लिए या बताने के लिए एनपीसी कहाँ है। हम भी प्रीमोस लेंगे। चिंगसी विलेज के अंदर, शिंगसा विलेज में। ओके, आर्टिफैक्ट तो घटिया ही रहे हैं यार, पर क्या कर सकते हैं। अभी इन आर्टिफैक्ट्स को मैं इसके लिए डाल दूंगा ना, मुझे थंडरिंग फ्यूरी चाहिए फिलहाल। तो ये जो घटिया वाले आर्टिफैक्ट्स आ रहे हैं इनको यहाँ डाल दूंगा। डिफेंस परसेंटेज, अटैक बेकार वाला, अटैक बेकार वाला, HP, क्रिट डैमेज विद बेकार 3 स्टैट्स, अटैक विद फ्लैट 3 स्टैट, हीलिंग बोनस, हद है। डिफेंस, HP, बेकार 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 बेकार, छी। HP परसेंटेज, क्रिट डैमेज, एनर्जी रिचार्ज, ये रख सकता हूँ। अटैक परसेंटेज, क्रिट रेट, ये भी रख सकता हूँ। ये हटा दो, ये हटा दो, ये रख लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। टेलीपोर्ट वे पॉइंट के पास जो ग्रैनी है उसके राइट में मिस बाय एनपीसी है। मेरे तो आर्टिफैक्ट में डिफरेंट ही ऐड हो रहे हैं। ये देखिए क्या क्या मिला है अपने को। EREM, ओके। डिफेंस, डिफेंस, क्रिट डैमेज, छी। अभी देखते हैं एनपीसी को, देखते हैं पहले ज़रा ये डोमेन रन पूरा किया जाए। सारे पूरा करने के बाद ना, जितना भी काम है आज गेंशिन के अंदर, सब पूरा करने के बाद मैं सीधा गॉड ऑफ वॉर खेलूंगा। मैं रात के चक्कर में पड़ूंगा नहीं। रात को आया तो कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। नहीं आया तो मेरी गॉड ऑफ वॉर पीछे पड़ी हुई है, छूटी पड़ी है। सेकंड फेदर अच्छा है, ठीक था, इट वाज गुड, मतलब ओकेश था। No, my sword! Body and mind. I'm going in! Let me weave you a verse. You're toast! Now you shall perish! Will. इसे कहते हैं डोमेन क्लियर करना। गॉड आर्टिफैक्ट में येलान और नीलू, भाई थंडरिंग पल्स है। येलान या नीलू को मैं थंडरिंग पल्स के पकड़ाऊंगा। ये अच्छा है। अरे HP, अरे ये सही आया, ये वाला सही आया। Why would I give Nilu and Yelan thundering pulse? You are not welcome here. No, my sword! Ring cutter! Eat this! No. Inazuma shines eternal! Will. How regret. हाँ, एक ऑफ पीस के लिए मैं रख सकता हूँ।
लेकिन यार रोल भी तो जाए, अगर रोल ही नहीं जाएगा तो फिर ऑफिस का भी क्या फ़ायदा। अरे ये वाला सही मिला है, अटैक विद क्रिट रेट एनर्जी रिचार्ज, ये मैं रोल कर सकता हूँ। डिफेंस विद क्रिट डैमेज, क्योंकि इस टाइम मेरा जो ट्रैवलर जो है ना, मेरे ट्रैवलर का तो मैं स्टैट दिखाऊँ, तो अब अपने ट्रैवलर के स्टैट दिखाता हूँ। अरे यहाँ पे नहीं है ट्रैवलर। There is no You are not welcome here. rain outlines your fate. Let's light it up! Teamwork is dream! Witness the power of Gugwa! You're toast! Torn to oblivion! Now you're testing my patience. Now will grant it again. गिल्डेड, ठीक है यार, वो दोनों सेम सेम। EM/ER डिफेंस क्रिट रेट, EM/ER अटैक क्रिट डैमेज। ये वाला पीस अच्छा है, दिस पीस इज नाइस गिल्डेड के अंदर। एक मिनट यार, एक विक्स की गोली खानी पड़ेगी फिर से। Let's go. Shine down! No, my sword! Let me weave you a verse. Everybody stand back! Now you shall perish! Will मेरे आर्टिफैक्ट्स में EM ही रोल होता है, किसी में 72 किसी में 63। तो भाई बढ़िया बात है, तो EM ही चाहिए। वाह वाह, छी छी वाह। चलो जी, हो गया डोमेन रन। डोमेन रन इज डन। अब चलते हैं अबिस की ओर, देखते हैं कितना हो पाता है। यार अबिस करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। लेट्स स्टार्ट। एक मिनट, कौन कौन है? फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ, ये सारे सेम ही हैं। फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, लेट्स गो। चलो आर्कन भाई, मैं चेस्ट फार्म कर लेता हूँ अगर आप चैलेंज नहीं कर रहे हो। अरे चैलेंज करना है, ये तो करने दो पहले एक बार। मैंने बोला तो सही, करना है, सारे काम करने हैं आज। फिर मैं करूँगा और तुम चेस्ट फार्म करने में लगोगे, फिर देख नहीं पाओगे। 2 मिनट रुकी जाओ यार भाई। 3.4 बैनर के वक्त मैंने न्यू अकाउंट ओपन किया और उसमें मुझे 10 पुल में हुताओ, बेडो एंड शिंगचो मिला। बहुत बढ़िया दोस्त। Emerge, right here. Into the wind. be still. Ta, ho, cha, ta. Ta, 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 ta. Right now. Right here. The wind knows me. As one with wind and cloud, spring forth! Into the wind.
Right now, right here. Emerge. Illusion shot. That's following orders. Nice and spicy. Time to act. Huh? Eat this. Torn to oblivion. New feeling. Archon today. There is no escape. Rain outlines your fate. Know my sword. Witness the power. Teamwork is dreamwork. Now you shall perish. वो इतने दूर 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 के घूम रहे हैं भाई इनको मारने के लिए अलग पिन कोड में जाना पड़ रहा है You're toast. Torn to oblivion. आपके पास कुकी C2 है मेरे पास कुकी C2 शायद है यस आई गेस all elemental resistance Propagate. Right here. One with nature. Cascade. Right now. Fallen leaves. Adorn my... Into the wind. Right now. Right here. Right now. Scatter! Shine down. Get them. Rain outlines your fate. Time to act. Let's light it up. I'm going in. Let me weave you a verse. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Teamwork is dreamwork. Rain cutter. Nice and spicy. Gooba, get them. There is no escape. तू बड़ा बाहर आ वो बाहर आ Everybody stand back. बाय Torn to oblivion. साहुरा अंदर बैठ के शील्ड के अंदर मजा ले रहा है Germinate. One with nature. Emerge. Right now. Emerge. Right now. Right here. Emerge. Right here. A sight to behold. Be still. तो ईएम बिल्ड कर लो उससे यूज काजुआ की जगह एज ए हीलर रख लो कभी अच्छा सपोर्ट देगी एंड प्लस डैमेज भी आएगा हीलिंग भी अच्छी है मतलब काजुआ के पीसों से दे दूं ईएम के लिए ये कह रहे हो Know my sword. You're toast. Let's end this now. Witness the power of Gawa. Inazuma shines eternal. पूरा का पूरा अबिस सेम है
पर काजुआ के पास तो वो है ना मेरे सारे क्या कहते हैं विरिडिसेंट वेनिरियर के सेट है। कुकी क्या करेगी उसका? Propagate! The wind knows it. Right now. Right here. Scatter! Spring forth as one with wind and cloud, one with nature. Emerge. Right now. Emerge. Cascade. The depths beckon. It's fine. The wind knows me. Right now. Emerge. Right here. Scatter! Right now. Propagate! फोर पीस टेनेसिटी देखता हूँ। लेट मी थिंक अबाउट इट। Illusion shot. No, my sword. Rain cutter. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Now you अबे shall shit perish. यार, कुछ और करना था, कुछ और किया। Shine down. Inazuma shines eternal. One with nature. Fallen leaves. Adorn my... Emerge. Right here. Right now. I'm always watching. Show them. Kamisato Arkhon. Suiyu. Scatter! There is no escape. Nice and spicy. Rain outlines your fate. Let me weave you Everybody stand back. Shine down. Torn to oblivion. Out of the frying pan, it's... elemental skill damage. Emerge. Right now. One with wind and cloud. May have overestimated myself. Be still. The wind knows it. Germinate! Scatter! Illusion shot. The insolent shot. Rain outlines your fate. I'm going in. Witness the power of Guwa. Now you shall perish. The merrier. Look at me. So very bored. Get them! Let's light it up! Everybody stick! Ring cutter! आ गई। Time to act. Switching to passive watch time for a while. कोई नहीं भाई। भाई फ्लोर 12 कंप्लीट करने के बाद ही स्पाइरल अबिस रीसेट होता है। नहीं ऐसा नहीं है। स्पाइरल अबिस अपने आप रीसेट होता रहता है।
उसकी ड्यूरेशन होती है, चाहे तुम क्लियर करो ना करो वो रीसेट हो जाता है। ए भगवान, गॉड। Close enough. A new time. One with nature. Emerge right now. Another test subject. Right here. The wind knows me. Propagate! Emerge right now. Right here. A sight to behold. Have a little terror. Emerge. Following orders. Ends here. Germinate! Your One with sacrifice is nature. ready. Fallen leaves. Adorn my... What a nuisance. Right now. Right here. Emerge. Propagate! Come on out. There is no escape! Nice and spicy. Body and brain outlet. Let me weave you a verse. Inazuma shines eternal! You're toast. I'm going in. At the front end, Shine down! Now you shall perish! The wind knows me. right now. Be still. Show them. Emerge. Clouds high. The birds call. अभी तो कैसे बढ़ गया? Kamisato Arkhon. Suiyu. बे One with nature. Right here. Emerge. There is no Before the abyss. Know my sword. बस पीछे कहाँ जा रहा है? Body and witness the power of Gugwa. Huh? Yeah. Eat this. Everybody stand back. shine down. Inazuma shines eternal. Guba, get them. Rain outlines your face. There is no escape. I'm going in. Let me weave you a verse. Illusion shattered. Nice and spicy. यार ये ना थोड़ा टाइम लगा था भाई साहब, और एनर्जी रिचार्ज भी नहीं हो रही, मतलब कि Let my guard down. Let's light it up. Shine down. Now you shall perish. Remove all obstacles. The mortal plane of fleeting dream. Body and mind. घर भागता ही बहुत है। Witness the power of Gugwa. Let's light it up. You're toast. वो अभी तो यही बाकी है।
Rain outlines your fate. Everybody stand back! Let's light it up! यार बड़े बुरे हाल हैं यार Let me अब read इसके। you a verse. बाय गॉड, मतलब कि अगर तुम नहीं मार सकते किसी को एक ही बार के अंदर ना, तो भूल जाओ तुम्हारा अब इसमें स्टार होगा। टाइम से क्लियर ही नहीं हुआ अभी मेरे वाला। बड़े बुरे हाल हैं यार। टू स्टार हो गया, 1 स्टार होगा, 3 स्टार हो गया। वाह, मुझे लगा नहीं था 3 स्टार होगा ये। मुझे नहीं लगा था 3 स्टार होगा ये। चलो फुल फ्लोर 11 चैम्बर 3। Scatter! Into the wind. Be still. Right now. Fallen leaves. Adorn my night. Right here. I'm always watching. Come on now. Propagate! Germinate! Say no more! The wind knows me. Taste my blade. The depths back. To the very Clouds high. The birds call. One with nature. cascade. अब रात को बदला लेगी नागिन आपसे। आना दो यार। Rain outlines your fate. Rain cutter. Teamwork is dreamwork. Come on. Know my sword. Rain outlines your fate. Witness the power of Go. Get them. अरे यार राइडन। Let's light it up. Everybody stand up. Eat this. Know my sword. Let me weave you a bird. Let's light it up. Booba, get them. You're toast. सपोर्ट नहीं मार दिया। फ्लोर 12 चेम्बर 1। ओके, यहाँ पे कौन कौन है? रूइन ड्रेक है, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ। आई गेस इस बार फर्स्ट हाफ के अंदर ठीक है। फर्स्ट हाफ, फिर सेकंड हाफ। लेट्स सी अब क्या होता है, देखते हैं। अब सही टेस्ट होगा। हमेशा यार, हमेशा यही होता है। ये दे दे तू मुझे भाई। I'm going in. Ring cutter. Torn to oblivion. Know my sword. Let's light it up. Teamwork is witness the power of Go. You're toast. Now you shall perish.
I'm going in! Rain cutter! Torn to oblivion! और भी रहेगा कोई? No, my sword! Let's light it up! Everybody stand back! Witness the power of good one. You're toast! Now you shall perish! Spring forth! Nothing lasts forever. Fallen leaves, adorn my night! The wind knows it. Mind the deluge. One with nature. Right now, right here, right now. Scatter! As one with wind and cloud. Into the wind. Emerge, right now, emerge. Time to go to work. Germinate! Right now. Fine. One with nature. Cascade! I'm getting sick of this game. Right here, right now, right here. A sight to behold. Sure. Dear me. Into the wind. Don't like it. This is... यार कितना कोऑर्डिनेटेड अटैक कर रहे हैं ये लोग ये? Right now, emerge. जाओ हम तो पैसिव अटैक से मारेंगे. जाओ. 2 स्टार शिट. 2 स्टार हुए. काजुआ ही मर गया. There is no Day! Rain outlines your fate. I'm going in! Let me weave you a verse. Eat this! Inazuma shines eternal! My blade! Final cut! The fairy! Illusion shattered! अरे बाप रे. Nice and spicy. No, my sword. Teamwork is strength. Witness the power of good work. You're toast. Torn to oblivion! There is no escape! Goba, get them. Body and knife. Everybody stand back. Let me weave you a verse. Now you shall perish! Illusion shattered! Nice and spicy. Rain outlines your fate. I'm going in. Inazuma shines eternal! Bro, can I use Gene in Raiden hyper carry team if I don't have Kazuha? हाँ, sure. Scatter! बिना यार Right निको के here. मैं बिना काजुहा के कैसे करूँगा ये? Is गया. over. वाह. Propagate! Mind the deluge. Cascade! But the plan was नहीं होगा. नहीं होगा. मुझे आयातो की टीम में एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा.
आयातों की टीम में एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। एक मिनट, अबैंडन। छोटा चेंज करना पड़ेगा। छोटा चेंज क्या है? राइडन, ये तो सही है। आयातों की टीम में ये काजुहा और डायोना। मुझे वहां पे शील्डर चाहिए एक। ठीक है, अब करते हैं। इसके बाद लवनीत भाई हम देखेंगे, ट्रेलर देखेंगे, वर्जन ट्रेलर जो हमने देखने थे। एनर्जी रिचार्ज 20%, ये लेके चलते हैं। Rain outlines your fate. Teamwork is dreamwork. Witness the power of Gugwa. You're toast. Shine down. Now you shall perish. पहले हैंगआउट करना है, ट्रेलर बाद में। Rain outlines your fate. Rain. I'm going in. Eat this. Torn to oblivion. Nice and spicy. No, my sword. Teamwork is dreamwork. Let me weave you a verse. You're toast. Now you shall perish. Booba, get the Oops. No, my sword. I'm going in. Ring cutter. Nice and sweet. Illusion shattered. Torn to oblivion. Think you can bully me? Look at Fallen leaves. Adorn my... right now. Kamisato Arkhon. Suiyu. Shake it and stick. Time to go. One with nature. Nothing lasts forever. Emerge. Right now. Be still. Emerge. Right here. Think you can bully me? The wind knows me. Can't handle your drink. As one with wind and cloud. Emerge. Right now. Come on out. The depths beckon. One with nature. Right here. Emerge. Right here. Think you can bully me? Cascade. Kamisato Arkhon. Suiyu. Fallen leaves. Adorn my... Right now. Emerge. Right now. Check where that come from. I'm always watching. Be still. देखा, सिर्फ एक डायोना के होने से कितना फर्क हो गया। 3 स्टार नहीं होगा। लॉन्गर देन 420 सेकंड कैसे हो गए? लेकिन डायोना के होने से बहुत फर्क पड़ गया। कैरेक्टर मरा नहीं। पिछली बार यहाँ पे काजुहा मर गया था। चलो कोई नहीं, कोई गल नहीं। There is no escape. No, my sword. Let's light it up. Teamwork is strict. Let me weave you a verse. You're toast. Inazuma shines eternal. You win. Gooba, get the...
Rain outlines your fate. Huh? Now Oh, you shit, shall yeah. perish. गलत हो गया उल्टा हो गया Nice and spicy. Rain cutter. Let's light it up. Everybody stick. Eat this. गलत हो गया उल्टा हो गया सब उल्टा हो गया Rain outlines your. Booba, get them. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Erase all threats. Teamwork is dreamwork. Let me weave you a verse. The thunder. Shit. Nice and spicy. Know my sword. Rain outlines your fate. Let's light it up. Witness the power of good. Eat this. अब राइडर ने रिश्तेदार भाई इस मेन कैरेक्टर्स को अपग्रेड वेपन भी मिलते हैं एंड यू लेवल अप यस भाई एग्जैक्टली मागू केंकी आ गए ना मागू केंकी यहाँ पे यस Look at you. Into the wind. Show them. Right here. Mind the deluge. Think you can bully me? One with nature. Right now. Emerge. Clouds high. The birds call. Diana special. Shaken and stirred. The wind knows me. Right now. Emerge. I may have overestimated. Come on out. Right here. The depths beckon. Nothing lasts forever. One with nature. Fallen leaves. Adorn my night. Can't handle your drift. Into the wind. ये आई मिको गई मेरी मतलब किसी ना किसी ने तो मरना ही होता है यहाँ पे कोई मरे फिर भी डायनो ने काफी बचा लिया भाई Mind the deluge. One with nature. As one with wind and cloud. Shaken and stirred. Cascade. फिर भी काफी बचा लिया डायनो ने यार लेकिन 3 स्टार तब भी नहीं हुए जोंगली इसलिए चाहिए एग्जैक्टली पहले वो ब्लू वाले को मारो क्यों ब्लू वाले को क्यों तीसरे चैम्बर में क्या ही कर लूंगा कैरेक्टर तो मर चुके हैं मेरे वेराइडन तो मर चुके हैं यहाँ पे इससे लड़ूं मैं Booba, get them. Know my sword. I'm going in. Out of the frying pan. Rain cutter. Nice and spicy. Teamwork is dreamwork. May my final stand be a monument to chivalry. अबे हट जा भाई नहीं होने वाला ये नहीं होने वाला छोड़ो जीवन में और भी बहुत सारे काम हैं जितने प्रीमोस चाहिए थे मिल गए काफी है
एग्रीवेट टीम नहीं बनाया भाई, एग्रीवेट टीम मेरे पास एक ही है, वो भी प्रॉपर एग्रीवेट नहीं है पर हाँ एग्रीवेट है, ये वाली। मेरे पास भाई C0 राइड है ना, उसके पास भी स्काईवर्ड स्पाइन है। हाँ तो 1 मिनट, ये हो गया। ये हैंगआउट इवेंट करना है ना, ये करना है ना। कुकी बिल्ड कर लो, करूंगा यार। यार पता मैं ना, मैं अपना जीवन ना, मैंने आज तक अपना जीवन अबिस के आसपास नहीं जिया, ठीक है। दो साल मैंने गेम खेली है ना, मैंने कभी अबिस के अराउंड कभी कोई टीम नहीं बनाई, ठीक है। अबिस में जितना हो जाता है। मेरा कोई लाइफ में गोल नहीं है कि अबिस में 36 स्टार पूरे करने हैं। जब कभी कैरेक्टर स्ट्रांग हो जाएंगे तो हो जाएंगे 36 स्टार भी। चलो जी, बिगिन हैंग आउट। फारूजान का हैंग आउट, लेट्स बिगिन। रेवन हु इज रॉयल, भाई तुम तो बड़े दिनों बाद आए, कहाँ गए थे? भाई तुझे गट्स है जो तू ऐसा गेम खेल लेता है, मुझे तो सरदर्द हो जाए। सरदर्द होता है कभी कभी, अपने को भी होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होता, होता है। Even though most of the academia's restrictions have significantly relaxed, I'm still a bit worried that the Matra might give her trouble. अबे ये तो क्या कहते हैं, फारूजान की थी हैंगआउट थी, ये कहाँ से आ गया? बोर्ड्स चल रहे हैं यार, बोर्ड्स का क्या ही करें, I सबके need चल to रहे stay हैं। here to keep an eye on the situation. Kale, can you head to Sumeru City and find out why she isn't here yet? Does it have to be me? I'd only assign a job this important to someone I trust. Are you not feeling well? Oh no, I'm fine. I've completely recovered. It's just that if I'm going to see her, I think I need to mentally prepare myself first. I know. You'll have a tough time if you go by yourself. If we could arrange for someone to accompany you... Defense D-Luke is back, exactly. Oh, hey there! Ah, it's been a while. What a coincidence. I was just thinking about asking you to accompany Kale to Sumeru City. Sorry, that's not what I meant. It's just that this matter concerns research banned by the academia. Not the sort of thing you'd shout from the rooftops. Also, you happen to know about this situation? There are very few people I can trust to be discreet right now. After giving it much thought, I believe you're the most suitable person for the task. It's complicated, and this isn't the best place to talk about it. We'll fill you in on the details once she arrives. You might have heard about her in Sumeru before. Her name is Faruzan, and she's a very experienced senior researcher. Let's just say that a huge part of Ksharowar's mechanical research over the past 100 years have used her academic discourse and manuscripts as their foundation. She is, but she vanished for 100 years because of a certain incident. She only returned to the academia after being found in the wilderness a few years ago. My rating is level 50 with level 50 Skyward Spine. Still her stats are not very bad. बढ़िया यार, मेरी level 90 है, level 90 Skyward Spine के साथ. Because of that, her current personality can be a bit strange, as is her attitude towards Kale. I'm getting a headache just thinking about it. She doesn't have bad intentions, so you don't have to be scared. I'll try. Yes, Ksharawar and Spontamod researchers are often quite prejudiced, so you should trust them with this matter. However, Faruzan isn't influenced by modern thinking. In our previous correspondence through letters, she indicated that she'd be willing to help.
100 years, हाँ 100 years की होगी ना भाई. फारूजान गायब हो गई थी. It's already past our arranged meeting time, but she still hasn't shown up. I don't think so. With her personality, it's more likely that she got wrapped up in some sort of trouble. Anyway, can you go with Kale to the academia and check on Farazan for me? Thank goodness. I was so anxious. I'm counting on you too. Kale, don't push yourself too hard. Just go there and see what's going on. Our task is important, but not that urgent. If Faruzan really is in some trouble, come back and tell me about it. We can always reschedule our meeting. सब कुछ ग्राइंड करना मुश्किल है भाई, आसान तो कुछ भी नहीं है. After all, if she's distracted by other things, it'll affect her ability to help us. All right, let's go. Sorry, what did you say? Oh, could you repeat yourself? As you know, I'm sure, hearing goes with age. Farazan, I said that you need to give us an answer. Ah, yes. And did you forget to add madam when you addressed me earlier? Your hearing is perfectly fine. Madam Farazan, we don't want to make things difficult for you. However, you haven't been teaching courses or supervising theses these past few years. Isn't this rather problematic as an advisor? Never mind the students. Even other advisors are starting to complain. And who, if I may ask, complained? If they have any issue with me, tell them to talk to me themselves rather than waste any of your time. You don't have to tell me anything. I very well know that it's those people from Haravatat. How I wish they'd put their time into doing proper research instead. But, Madam Farazan, it has been a long while since Farazan you ka last hangout made event hai any practical academic contribution yourself. Academic contribution cannot simply be divided between the tangible and the intangible. The issue here, I believe, is that the reviewer doesn't understand the very nature of knowledge itself. In any case, makes no sense to use a metric like this to evaluate a mentor. Which sage set this rule anyway? I should write a letter of complaint right this instant. Wait! Madam Farazan, please let me finish. That's her, all right. But the person with her doesn't look like a Matra. Shh! She hates it when people call her young! I thought you were gonna God of War. God of War करूँगा. मैंने बताया ना पहले ये हैंग आउट करना है, फिर दिया की जो स्टोरी क्वेस्ट है वो करनी है. उसके बाद अगर मेरे शरीर में जान बची तो मैं अभी गॉड वॉर खेलूंगा, नहीं तो I'll try to play it tonight. Her body apparently stopped aging during the year she was gone. So that's why she looks the same as she did 100 years ago. Okay, I think I'm ready for this. Let's go! Anyway, Akara Crafts and the leader of Kasharawar would like to invite you to collaborate on this project. They're wondering if you'd be interested. Madam Farazan? Are you listening? Mm-hmm. Ah, Kale! Why are you here at the Academia? Are you feeling better now? I'm much better, Madam Farazan. It's all thanks to the Traveler and the Dendro Archon. Have you been sleeping well? You seem to be developing some eye bags. Is that brat Tainari forcing you to stay up late again? No, it's because I'm a slow learner. It's not Master's fault. It's good to be hardworking, but you need to take care of your health. I'll have to give Tainari a right talking to when I see him. I'll also prepare some health supplements for you. There's really no need. Ah, and is the person beside you the legendary Traveler? Oh, I've heard much about you before. In fact, I've been meaning to meet you for a while now. It is thanks to you, after all, that the Academia is finally getting back on its feet. Even Kale's illness is... Ahem. Madam Farazan, I believe we were still discussing the collaboration with Akara Crafts.
I'd wager it's those Kasharawar dunderheads finding excuses so that I'd go to their darshan. Say no more. I have no plans to change my field of research. If you're this unwilling to participate in the collaborative project, you can also consider teaching a class. It might be difficult to teach a course with topics that only fall within Haravatat's subjects, but we can't delay this anymore. You need to give in it. You can teach a course or participate in a collaborative project. If you don't do either, it'll be hard for me to persuade the advisors and students who have been complaining. Could you not give me a few more days to consider? This matter has been delayed for so long already. That's precisely the issue. If you don't give an answer today, I fear that someone will soon escalate their complaints to the sages. What a waste of free time these folks are. Now you two are here at Tainari's behest, I take it. I'm sorry, but given the current situation, it looks like I'll have to come over some other day. Of course. I shall need some time to think as well. हैंगआउट इवेंट्स और स्टोरी क्वेस्ट में क्या फ़र्क है? What now? She seems so busy. मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता नहीं दोनों के अंदर. Master said there's no rush, but I know that he's been busy working on something for the FBI, so he hasn't returned to Gandharville for several days now. I feel for Madame Farazan, but I still want to ask her to come with us. But if I get her in trouble with the academia, then she won't have the time to help Master. What Different should I endings? do? Oh, this is such a headache. लेकिन है तो सारी स्टोरी क्वेस्ट ही ना. Yeah, that would be the best for them both. I'll check with Master later and see if there's anything I can help him with. Hangouts are kind of better than story quest. But I'm sure he'll say, the best thing you can do now is study hard, so I don't have to give you remedial lessons. मुझे दोनों एक जैसे लगते हैं, सही बताऊं तो. Oh yes! This way she can get her problem sorted out quickly, and then she can go see Master. So if I also stay and help... that still sounds kinda scary. Okay then. I'm counting on बस you. स्टोरी क्वेस्ट में पाइमॉन आती है एंड हैंगआउट में पाइमॉन नहीं आती. दोनों में यही फ़र्क है. कह सकते हो. हैंगआउट में तो डीपली स्टोरी पता नहीं चलता. स्टोरी तो यार देखो, क्या कहते हैं, हैंगआउट्स के अंदर कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है. ठीक है. और जो स्टोरी क्वेस्ट होती है उसके अंदर कैरेक्टर प्लस जनरल जो लोर है चारों तरफ, उस पर भी थोड़ा सा फोकस होता है. I have to teach students from Haravatat or owe Kasharawar a favor. It strikes me that they might be even less happy about such a deal than I am. I think I can sympathize with them. We're back, Madame Farazan. The Traveler said that he can stay and help you. Oh, why I couldn't ask for more. In fact, I'm rather curious about the type of person the Traveler is. You were the one who taught Azara a lesson after all. That said, will I be troubling you? Is that so? Good. It does so happen that I do have something I need help with. Now, should I apply to teach a course with Haravatat or join the collaborative project that Kasharawar is proposing? Honestly, I don't want to choose either of them. You might have heard of it before. Haravatat is an academic faction that researches languages and runes. 100 years ago, Madame Farazan was a researcher from that darshan. Now, not was. Still am. Yes, of course. But current Haravatat students can't really... understand her direction of research. So even if she opened a course, chances are that no one would attend. In summary, I mean to interpret the configurations and solutions of ruin mechanisms via the deciphering of on-site stone carvings and unearthed documents. It'll include research into general documents dealing with such ancient machines. The research method is supported by Haravatat, yes, but the content deals heavily with both ruins and mechanisms. This will make it difficult for students of this darshan because they don't understand much about mechanisms. Also, there are fewer and fewer unexplored ruins left nowadays, and Kasharawar researchers have been developing their own theories on mechanisms. As such, they don't need to rely on ancient documents.
They're far too complacent. Ancient mechanisms are more dangerous and complex than one might imagine. I'm telling you, things weren't like this 100 years ago. All researchers back then were interested in exploring knowledge from a variety of topics. They also gave more respect to unknown mechanisms. Nowadays, all people are interested in are mainstream subjects in popular research. Even if they attended my course, I wouldn't be interested in teaching them. Also, the people here think that my research is outdated and unrealistic, so they keep cutting my funding. Why, I think they could all stand to learn from Kale. She's a hard-working child and respects her elders. Huh? Why me? If only those who came to my lectures were more like you. Speaking of which, are you feeling better? You don't have to confine yourself to Gandharvaville anymore, right? I just remembered that I have a lot of studying to do. I need to head back and find Master. Are you telling me to start a reading course for Kale? Wait. Although Tainari has academic dealings with the academia, he isn't considered part of it. This means that Kale isn't technically a student. No, he's right. The old academia became consumed by their arrogance precisely because they ignored the public. There must surely be many people like Kale and Sumeru who are passionate about learning but cannot study due to various reasons. The old academia paid no heed to them. But if I start a reading course for Kale as a pilot, perhaps this shall come to benefit many more people in the future. I'll need to go back and ask if this is in accordance with regulations. Oh, save yourself the extra trouble. I'll come with you. If there's any arguments to be had, we shall sweep them aside together. Traveler, Kale, do wait for us a little while outside the academia. I'll be back in just a moment. सबसे पहला हैंगआउट इवेंट जो मैंने किया था ना, सबसे पहला वो था उसका चोंगयुन का। सबसे पहले मैंने वही किया था। Wait! Let's catch up with her. I can't believe she rushed right in after we arrived. She's really headstrong. No, not really. Madame Farazan is a brilliant scholar. Even Master thinks so. If she's really going to teach me how to read, it'll definitely be much better than me bashing my head against the wall. बेनेट का किया था। बेनेट का मैंने किया तक कि नहीं किया, शायद किया है। It's just that she can get a bit too passionate sometimes. I don't know how to handle that. Maybe it's because she wants to take me in as a student? It's just like that researcher said. The academia has completely changed during the 100 years that Farazan was gone. I don't really get it. But it does seem like Haravatat's students aren't optimistic about the prospects of doing research with her. Students who are interested in mechanisms and applications of the elements generally enroll in Kasharawar and Spontamod. Madame Farazan also refuses to accept random students just to make up numbers. She still hasn't found a student she likes, even after all this time back. मैंने अब तक एक भी नहीं किया। पता नहीं, कुछ चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट इस गेम के ऐसे हैं कि उनको करने का मन नहीं करता। ये हैंगआउट इवेंट्स उनमें से एक है। कभी-कभी दूसरा सेरेनिटी पॉट, कभी-कभी याद आता है अच्छा वहाँ भी जाना है। But she seems to like my attitude toward learning, so she often asks me if I'm willing to become her student. भाई काम करो, वैलो खेलो, व्यूज ही व्यूज। पर वैलोरेंट में यार बढ़िया होना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। इफ यू आर नॉट गुड एट वैलोरेंट, लोग आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। It's because I'm a slow learner that I have no choice but to stay up late and study. Whenever she compliments me, I feel really guilty. यार पता है क्या, मैं तुम्हें फ्रैंकली एक बात बताता हूँ। देखो, एज अ यूट्यूबर, एज अ पर्सन हु इज स्ट्रीमिंग, मैं टाइम लगा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मुझे भी सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे भी व्यूअर्स चाहिए। पर मेरा स्टैंड स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि इस टाइम 4 लोग देख रहे हैं मेरी स्ट्रीम, ठीक है। मैं भाई तुम 4 लोगों में खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आ रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे इंटरेक्शन चल रहा है अपना, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मेरे लिए काफ़ी है ये, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करना चाहता अपने मन से हटके सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए या व्यूअर्स पाने के लिए। वो चीज़ सही नहीं रहती, वो चीज़ कभी सही नहीं रहती।
that. Madame Farazan respects my choices. स्टार्टिंग में मैं कैरी कर She hasn't been लूँगा. trying to persuade me, especially since she knows I need to rest and recuperate. She sometimes brings food to Gandharville for me, and each time she says that Master can't find out. Now that you mention it, it does feel a bit like that. Do I really look that young? Kale, traveler, thank you for waiting. The issue has been resolved. I argued with the higher-ups and convinced them of the practicality and necessity of educating the general public. If I'm not mistaken, they're the students of my classmates' students. They're a lot less forceful than their predecessors, though. I'd say they caved rather quickly. मैं भी नहीं खेलता गेंशिन. एक बार मैं खेल लेता हूँ, अभी स्ट्रीम पे खेलूंगा पूरे दिन, उसके बाद मैं गेंशिन नहीं खेलता. बाई चांस मेरा बहुत ज़्यादा टाइम है, कुछ करने को नहीं है, तो फिर मैं खेल लेता हूँ. चेस्ट वगैरह कर ली है ना, वो सब कर लेता हूँ, लेकिन इतना घुस के मैं भी नहीं खेलता. जोरो गुड आफ्टरनून, आओ आओ आओ. इसलिए मैं दूसरी गेम्स इसलिए तो खेलता हूँ. GTA हो गई, पीछे भी टेल मी वाई थी, टूम रेडर थी, अभी गॉड ऑफ वॉर चल रही है, ये इसलिए तो चल रही है. हॉगवर्ट्स लेगेसी भी अभी स्टार्ट करूंगा मैं. Amazing. It's just that we need to fill in every single page of the application. It's been a century, but the academia is as picky as ever. Let's see now. What do we need to fill in? Course name, learning objectives, teaching methods, course materials. I suppose we can fill in the course name. That's a bit too general, I'd say. After all, this class's target audience isn't toddlers or children, but rather people who already know the basics of reading. GTA बंद नहीं हुई है. देखो कुछ गेम ऐसी है जो मैं दोबारा नहीं खेलूंगा, ठीक है. एल्डन रिंग उनमें से एक है. अब यहाँ पे सिड होता तो वो सुन के फिर कहता अरे यार, पर मैंने मेरे पता क्या होता है, अंदर से जब आवाज़ नहीं आती है ना कोई गेम खेलने की, मन नहीं करता, तो मैं बस स्ट्रीम दिखाने के लिए वो गेम नहीं खेल सकता. गेंशिन मेरे जेन्युइनली खेलने का मन करता है. एल्डन रिंग मैंने फर्स्ट टाइम खेली यार. एल्डन रिंग मैंने फर्स्ट टाइम खेली, मेरा दोबारा उस गेम को छूने का मन ही नहीं हुआ फिर कि मैं दोबारा उस गेम को खेलूं, तो मैं नहीं खेलूंगा. GTA मुझे अभी भी खेलनी, क्योंकि मुझे GTA की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. बीच में गॉड ऑफ वॉर स्टार्ट कर दी थी, तो रात वाली स्ट्रीम में भी मैं थोड़ा सा वो रखना चाहता हूँ, वेरिएशन रखना चाहता हूँ, ताकि मैं भी बोर ना हूँ, देखने वाले भी बोर ना हो. 3-4 नहीं 9 एक्चुअली. हाँ यार ज़्यादा खेलिए, 3-4 तो तुम कम कह रहे हो. As such, we'll need a more specific learning objective. How about proficiency in reading and writing? That's true. If we use children's teaching materials, we'll only end up wasting a lot of time on things that students would already know. And you have your job as a forest ranger, Kale. People who attend this course in the future are also likely to have life commitments. We need more effective teaching methods. Even though I have completed Sekiro 5 times, Elden Ring खेलने का. Elden Ring का पता क्या है? Elden Ring स्टार्टिंग में फ्रस्ट्रेटिंग होती है, क्योंकि आप इतनी बार मरते हो तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है. लेकिन Elden Ring का सीन ये है कि उसको ना वो एक तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ती है. आपने बहुत प्रैक्टिस दी, बहुत घंटे लगाए गेम के अंदर, आप गेम में अच्छे हो गए, उसके बाद गेम खेलने में मज़ा आएगा आपको. मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं एक गेम में इतना टाइम नहीं लगा सकता, है ना. और देखो गेम में टाइम लगाओ आप, अगर आप गेम की स्टोरी को प्रोग्रेस कर रहे हो, समझ रहे हो. जैसे कोई गेम है, अगर वो 12 घंटे की गेम है, मैंने 2-2 घंटे की स्ट्रीम करके 6 स्ट्रीम के अंदर वो गेम पूरी कर ली, तो वो समझ में आता है. लेकिन अगर मुझे पहले तो गेम में अच्छा होने में 10 घंटे लगेंगे, फिर अच्छा होने के बाद उस गेम को कंप्लीट करने में आगे 30 घंटे और लगेंगे, उतना टाइम नहीं है मेरे पास यार, उतना टाइम नहीं है. शायद मैं टीनेजर होता, मैं स्कूल के अंदर होता तो मेरे पास टाइम होता. अभी नहीं है. इस स्टेज ऑफ माई लाइफ मैं इतना डेडिकेशन नहीं दे सकता किस गेम के अंदर कि पहले मैं उसको सीखने में टाइम लगाऊं. गेम शुड बी इजी टू लर्न, ठीक है भाई. दैट इज एवरी फ्रॉम सॉफ्ट गेम. हाँ तो ठीक है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन. मैं नहीं कह रहा गेम बेकार है, गेम कतई बेकार नहीं, गेम बहुत सही है, ठीक है. और उसका जो पे ऑफ है, अगर आप उसमें टाइम लगाते हो, गेम में सीखते हो पैरी करना, कैसे कैसे पैरी करते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें करते हैं, तो इट्स अ गुड पे ऑफ.
आपको अच्छा लगेगा कि यार मैं कितने बढ़िया तरीके से गेम खेल रहा हूँ, पर मैं उस पॉइंट तक के लिए इतना टाइम गेम में वेस्ट नहीं कर सकता। Master always tells me that practice is the best way to learn. That's why I often ask him to help me find simple books to read. अब गॉड ऑफ वॉर देख लो, गॉड ऑफ वॉर में भी पैरी का मैकेनिक है, गॉड ऑफ वॉर में भी आप लड़ते हो, लेकिन मुझे उस फाइटिंग स्टाइल को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो मैं उसको जल्दी से सीख गया हूँ। तो नाउ आई कैन एंजॉय द स्टोरी, नाउ आई कैन एंजॉय द गेम। It must have been difficult to get books in Sumeru in recent years, no? Tainari really went the extra mile for you. Expanding literacy is a capital notion. Now that the academia is easing restrictions on the circulation of books, there should be more people who have become interested in reading. It's a great time to conduct this course. So that's next on the list. I fear that I'm at a loss as to which books youngsters like nowadays. Would The Legend of Antara be too old of a story? Fair. Kale, what have you been reading lately? Me? I've been reading light novels from Inazuma. I heard that ever since God we of were War is allowed to Inazuma, sell हाँ, books in इतना ही Sumeru चाहिए। again, some people set up stalls at Treasure Street to sell light novels. I've been meaning to go there and check it out. मतलब कि गॉड ऑफ वॉर में भी डिफिकल्टी लेवल्स हैं। गॉड ऑफ वॉर में तुम बिल्कुल वो जो हार्डेस्ट डिफिकल्टी लेवल है उसमें खेलोगे तो उसमें भी तुम जीत नहीं पाओगे आसानी से। इसलिए मैं कभी भी गेम खेलता हूँ, मैं नॉर्मल डिफिकल्टी से ऊपर जाता ही नहीं हूँ किसी गेम के अंदर। मुझे स्टोरी जाननी है, मैं हमेशा से स्टोरी वाला बंदा रहा हूँ। कोई भी गेम खेलूँगा मुझे स्टोरी जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उस गेम की, मैकेनिक्स से ज़्यादा। तो अगर स्टोरी अच्छी है तो मैं मैकेनिक्स को एक बार को फॉरगिव भी कर दूंगा कि ठीक है माफ़ किया, अगर मैकेनिक्स टेढ़े मेढ़े हैं, स्टोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए और मैकेनिक्स ज़्यादा हार्ड ना हो सीखने में। Light novels? This is my first time hearing about such a thing, but I doubt I will procure suitable teaching materials from the House of Dana. Treasure Street it is. Wait for us, Madame Farazan! You wouldn't think someone as fast as her is over 100. Let's pick up the pace and catch up to her. What a long and mildly ungrammatical title. And why is the cover so colorful? Is this your first time seeing a light novel, ma'am? Oh, they're the most popular of books nowadays. Would you like me to recommend something? Fine. One shouldn't judge a book by its cover after all. May we browse through the books here? Of course. Why don't you try this one? It's Outlander Brigade, When the Wind of Death Blew Towards the Blonde Samurai. I heard that this book's author describes action in vivid detail. एक जीने नाम की वेलकरी है, वो इतनी ज़्यादा हार्ड है, उसके लिए स्टोरी से अनरिलेटेड रेल्म में जाना पड़ेगा, फिर सब मैक्स आर्मर लेना पड़ेगा। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे मटेरियल है गेम के अंदर और आपके पास टाइम और मन दोनों है तो खेलो। मैं नहीं खेलता, मैं गेम को एक बार खेलता हूँ, स्टोरी पूरी होगी देन आई मूव ऑन। पीछे कुछ मटेरियल छूटा, कुछ छूटता रहे। Now I've only skimmed through a few pages, but it feels like it's all fight scenes. There are only subjects and predicates, and the syntax is a tad simple. Subjects? Predicates? The protagonist just ends up fighting in every scene with no proper build-up. Will anyone even enjoy a story that's only comprised of fights? बट वो ऑप्शन है एग्जैक्टली, मारना ज़रूरी नहीं उसे। Python edits, will you review my account? हाँ श्योर यार, सेंड अस योर अकाउंट, भेजो भेजो। How about... the good thing about being reincarnated as a hilly churl is that I only need to eat Sunsetias to become stronger. वाह क्या किताब है। ओके भाई 2 मिनट वेट करो, ज़रा ये ख़त्म होने दो, फिर देखता हूँ। ख़त्म मतलब कि लेट मी कम आउट ऑफ दिस सीन। Isekai story? Those are pretty popular right now. जल्दी रिव्यू कर दो, फिर मुझे 10 मिनट के लिए जाना है। Isekai? What in the world is that?
Also, अब यार why ये चल does रहा it है ना, become stronger by eating Sansetias? अभी सीन से बाहर नहीं जा सकता ना अभी मैं. Tropes? Ah, those fictional rules used to push the plot forward, yes? They're definitely effective in achieving a distancing effect. खाना लेके आना है. कहाँ से? Sorry. What is this distancing effect? However, this book doesn't explain how reincarnation correlates to becoming stronger. Such an illogical rule will affect the coherence of the story. Will readers really accept this? How about this? I had to fight tooth and nail to get this in stock. Oh, that's the latest volume of Onibudo! Now that's a rather normal title length. Oh, Kale, do you like this series? Yes, but I don't like it that much. Madam, are you going to use this series as teaching material? Let me see. The dialogue flows quite well, but there are too many phrases here that I don't recognize. Third eye of perception, illusory mirror, and so on. Are these terms that are tied to tropes? I also thought those names were strange when I was reading them. It's impossible to derive the meaning of these phrases in isolation. Also, their morphological properties are quite pedestrian, really. Or did the protagonist purposely create these strange names to disorient their foes? So there's no deeper purpose. It's quite hard to understand stories written these days. क्या ASMR दे रहे हो? लो दोबारा लो. You're right. It's such a weird book. But you keep wanting to read the next page. Even the most popular book in Sumeru back then had greater depth than anything written today. एक आइडिया है मेरे को YouTube वीडियोस बना के स्ट्रीम से हट के. क्या आइडिया है? शेयर करो. Yes, a Bahumano researcher wrote it while researching folk legends. The plot had many twists. The world building was fantastic, and even the writing could withstand scrutiny. अच्छा, When it was still Dash being published, many people in the academia were reading it. Dash into Platinum in Valorant. हाँ, ये तो बहुत लोग बनाते हैं. ये तो League of Legends में इतने बनाते हैं. Road to Challenger, Road to Diamond, Road to Platinum. Even the sages back then all described the story as a timeless classic. The series must have concluded after so many years, right? Perhaps it's even more popular now. Is there a book like that in Sumeru? I've never heard of such a thing before. What's the title? It's called Tales of Shariar. Do you sell it here? Tales of Shariar? I don't think I've heard of that before. About 100 years ago. 100 years ago? Are you pulling my leg? What sort of book can remain popular for 100 years? The Legend of Antara is popular to this very day, isn't it? I just heard someone telling it a few days ago in a cafe. If an old story like that is still being shared, then Tales of Shariar must be even more popular. Even if that is the case, I really don't carry that book here in my store. What? Is that because of the academia's strict control over books in recent years? I can't believe they've allowed the people of Sumeru to become so uncivilized. How can they not know about the Tales of Shariar? Tales of Shariar? Oh, I mean, it is a book from 100 years ago. मैं यार डायलॉग स्किप कर रहा हूँ. Why ठीक don't you है? try asking for it there? मैं डायलॉग स्किप कर रहा हूँ. Tales of Shariar is considered an antique now? How could the Akad traveler, Kale? मतलब पढ़ रहा I'm हूँ. going to get to the bottom of this. डायलॉग मैं पढ़ Let's रहा हूँ meet at the पूरे antique sellers. लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ. Madam, wait! Oh no. You asked me why I'm scared of It's because I'm afraid of that ancient language she researches. Because I can barely. Even so, what if researchers from 100 years ago like to use? हाँ, अब पाइथन का अकाउंट देखना है ना.
8537 48740. Python. Conquering demons is what I do. Okay. 2243. अरे बहुत सही, बढ़िया. 2-piece echoes, 2-piece gladiator. यहाँ रोल कहाँ गए? क्रिट रेट में बराबर बराबर. क्रिट डैमेज विद एनिमी डैमेज बोनस. क्रिट डैमेज विद क्रिट रेट. बढ़िया यार, नाइस. 1599. एक मिनट यार, थोड़ा सा कम है. क्रिट डैमेज कम है और अटैक भी कम है. थोड़ा सा इस पे ध्यान दो. 4-piece एम्बलम C0, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एनगल्फिंग लाइटनिंग भी होती ना तो भी समझ में आता, कॉम्पनसेट हो जाता. राइडन का CR कैन बी बेटर. CR राइडन का CD कैन बी बेटर. 63% फिर भी डिसेंट है, लेकिन CD बहुत कम है. येलान विथ 35,000 HP. सही है ब्रो. स्ट्रिंगलेस दी हुई है R2 लेवल 90. 4-piece एम्बलम C0 10-10-4. 68,195. ये सही है यार, ये सही है. विटसेट दिया हुआ है. डेजर्ट पवेलियन 4-piece. तुम्हारा भाई वो लग रहा है ट्रू फ्री टू प्ले अकाउंट लग रहा है. F2P ऐसा ही क्या? 45,000 सही है. ब्लैक टासल. टेनेसिटी 4-piece C0. फ्री टू प्ले अकाउंट है, लेकिन फ्री टू प्ले हिसाब से बहुत बढ़िया है. इट्स रियली रियली नाइस. प्योर F2P है ना? कैच लगा लो भाई के पास. कैच है ऑलरेडी, कैच ही लगाया हुआ है. चलो भाई, ये हैंगआउट इवेंट पूरा करें पहले तो. Found it! The 5th volume of Tales of Shariar! Wow, you act. I never thought this book would ever get... All right, that's our teaching material secured. We also now know what to call this course. Luckily, the language. As long as the writing is good, readers won't need any illustrations to imagine the scenes. Worry not, I shall thoroughly explain the difficult sections. You'll like this book, I know it. After all this time, I wonder if Aaliyah and Aziz ended up. Sir, do you have the subsequent? I don't think so. Is that so? And here I thought I could finally read the ending. If I'm to use it as a teaching material, it's better to start earlier in the series. Where are the first 4 volumes? Why aren't they all together? I don't have those. Is this series really that popular? No. It's not popular at all. No demand? Impossible. Back then, I'd come across... Seriously? No one told me that this book was anything special when I first got it. Where did you get this from? Can you... I'm afraid not. This book was sold together with a whole bunch of... Otherwise, the Matra would have come knocking. Wait, is this book actually worth a lot? That's impossible. No matter how strict the academia was,
There's no way Tales of Shariar. I do remember a passerby skimming through the book a few सबके days board ago. exam However, he simply sighed and left. मेरे ग्रुप में सबके बोर्ड एग्जाम है, जिससे पूछो बोर्ड चल रहे हैं. He sighed? Why would he react like that? Given the quality of Tales of Shariar, he should have been entranced after a single glance. I'm sorry. Traveler, Kale, please. Why is there another misunderstanding between Ali and Aziz? And a new character is introduced with no foreshadowing at all? Is this really the Tales of Shariar? Well, that passerby reacted in much the same way. It's Mada from the cafe over there. You know, the since that's also a very old story, maybe he knows a thing or two about that, Then let's go ask around at the cafe. Huh? Madame Farazan? Huh? पुष्पा कैफे. Another day. Excuse me? But, Yes. well... sorry. It's fine. I'm used Do you know about Tales of Shariar? Huh? Tales of Shar? My master always talked about how incredibly popular that book used to be. However, Your master? yes, the one who taught me how to be a storyteller. He also said that this great-great-grandmaster was an academia He wrote 4 volumes back then, and the reviews just got better and better. You couldn't find... And then? What happened next? Oh, it's hard to tell when it comes to trends. One day everyone likes stories like that, and the next day, instead of writing a proper ending, to tap into popular trends, he added a lot of tropes. How could that be? Then what happened? In the end, there's no ending. The great-great-grandmaster tried to write a few more volumes, following whatever trends were popular at the time, but the trends kept changing right as he published his books. भाई मुझे नींद आ रही है. ये हैंगआउट इवेंट इतने बोरिंग कब से होने लगे? चोंगयुन का इवेंट कितना इंटरेस्टिंग था. He got so infuriated that he stopped writing altogether and focused on his research instead. What? So there's no ending? The readers didn't care? By that time, anyway, my master the only tangible thing my great-great-grandmaster, he also left behind many theses from his research phase. When my master talked about Legend of Antar, my master is a much better storyteller than me. But even he won't recite Tales of Shariar due to its So, Antara's story is the one that lasted through the years. Well, not even sages can definitively ascertain the quality of something like a story. Only time? Madame Farazan? It's been 100 years. Perhaps some things I once believed to be great aren't. Yeah! Master helped me find a lot of famous books that, no matter how good those stories are, I can't improve my skills if I can't bring myself to read them in the first... Huh. Indeed. That is true. Readers' interest in trends. What was popular 100 years ago could be completely forgotten in modern times. And yet, 100 years, as far as history is concerned, is but a blink of an eye. If Tales of Shariar hadn't chased after trends and instead stuck to its original style from start to finish... भाई तुम्हारे कहने पे तो मैं खेल रहा, तुम ही नहीं देख रहे. तुम्हारे कहने पे तो मैंने ये क्वेस्ट स्टार्ट की थी. मेरा तो करने का मन भी नहीं था ये. तुम ही चले गए. और तुम पूछ रहे हो अभी तक चल रहा है क्या? वाह. शाबाश. It might have stood some chance of gaining renewed popularity. No, even if that didn't happen, at least it would be a work that was Huh? Hardcovers? I don't really get what you're talking about, but it does sound... How unseemly. I almost got carried away because of a single book. Well then, we should get back to the matter of our teaching material. It looks like... no. Kale, you found a book that you... Then we'll use that book as our teaching material. As for the academia,
As long as we come up with an appropriate course name, we should be able to get away. My, it sounds like you've dealt with the academia before. Let's go with that. मैं बाहर था उस टाइम, अभी घर आया हूँ. Now then, let's return to the book vendor in a bit and buy the latest volume of this Oni Buddha. Ah, but if I wish to... Huh? Speaking of which, other than third eye of perception and illusory mirror, I'm such things as... Even if it reminds me of my dark history, I still can't help. Why do people use dark history to refer to awkward or embarrassing memories? If one of our learning objectives was researching linguistic changes over the past 100 years, it might... Oh, I can tell you what that's all about. Apparently, in their youth, some people used to imagine themselves as someone burdened by... But as they grew older, they started to become embarrassed by such memories. Mata? You know, I'm such... Huh? Why so suddenly? I knew it. There will always be people who love the golden oldies. Okay. Now I'll do the quest. जब मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा करने के लिए. Bro, मेरा सर घूम गया. यहाँ कोई चेस्ट है? नहीं है. गॉड, मेरा लिटरली सर घूम गया इसको इस के अंदर. तो एंड टू थिंक कि अभी 4 और बाकी हैं, 4 एंडिंग अभी बाकी हैं. वाह. अभी क्या करें यार? उसकी क्वेस्ट करनी है, दिया वाली क्वेस्ट भी करनी है. इन्हें सेव कर लिया करो कलेक्शन के लिए. किसे सेव कर लूं? कितनी देखो, इसकी बची हुई है, इसकी बची हुई है. निंगवांग की ऑल एंडिंग्स रीच्ड, युंजिन की ऑल एंडिंग्स रीच्ड, गोरो की हो गई है. ये सारी एंडिंग्स रीच इसलिए हो गई हैं क्योंकि ये वाला अकाउंट किसी, याद है मैंने अकाउंट लिया था किसी से, मेरे ओरिजिनल अकाउंट में ये कुछ भी नहीं हुआ. बेनेट की 0, चोंगयुन की 0, बारबरा की 0, नोवेल की 12 एंडिंग्स हैं. वाह. एंडिंग की पिक्चर्स को सेव ही हैं यार. चलो दिया की स्टोरी क्वेस्ट की जाए फिर. दिया की स्टोरी क्वेस्ट करूं या जो बाकी के वो देखने थे अपने को, वर्जन ट्रेलर देखने थे, वो देखे जाए. बताओ, वर्जन ट्रेलर आ गए थे ना बीच में. बताओ. आई एम वेटिंग. दिया की इंग्लिश वॉइस आर्टिस्ट का नाम है एम्बर और जापानीज वॉइस आर्टिस्ट का नाम है अयाका. एज यू विश. फिर एक काम करते हैं, वर्जन ट्रेलर देखते हैं और उसके बाद इफ आई वांट फिर हम गॉड ऑफ वॉर खेलेंगे. मुझे वर्जन ट्रेलर का भेजा था क्या वो? हाँ ये ना वर्जन ट्रेलर. कहाँ पे थे हम? कहाँ तक देख लिया था? मिड समर आइलैंड एडवेंचर यहाँ तक देखा था. उसका देखना ये वाला वर्जन 2.0.
Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The almighty Shogun, गुजिया खाते हुए देखेंगे focused गुजिया exclusively on our single goal of implementing eternity. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. When a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. In other words, a person's vision represents their ambition. It must be a possession, right? I see. That reminds me. It seems that his vision was recently confiscated. It's just like that feeling of emptiness. The feeling that something is missing. For to be stripped of one's vision is to be stripped of one's ambition. As one who is thrown into the sea, though he fights back desperately against his predicament, it does nothing to prevent his descent into the depths. My intuition was correct. The wind that blows from afar carries fresh life to these shores. Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit the world are inconsequential. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Now, it is time for me to honor my word! I await your instruction. My apologies! Kamisato art! Sumetsu! Do not forget that challenging the Vision Hunt Decree is tantamount to challenging a deity. When you are ready, go to Hanamizaka and look for a fireworks shop run by the Naganohara family. There, you will find someone who can help you. ये वाला देख लिया हमने ये देख लिया था Shadow amidst snowstorms ये देखना था 2.3 कितने पैकेट भुजिया के हैं भाई मेरे पास 1 2 3 6 भुजिया और हैं भुजिया नहीं है गुजिया गुजिया जो होली के टाइम पे गुजिया होती है ना वो है This newfound strength, I will defend those who fight alongside me. Protecting my soldiers doesn't just mean having a robust defense in place. It means going on the attack. The key to seizing victory in battle lies in remembering the meaning of battle and employing the right tactics to generate momentum. Keep your weapon at the ready. You never know what's around the corner. Press the advantage! And Oni! The Tenryou Commission recently issued an arrest warrant. Arataki Ito. We've been trying to apprehend him recently. People see Oni causing trouble again. That'll defeat the whole purpose of the sacrifice you made! Come on, men. He won't get away this time. Just give yourself up, Arataki Ito. A long time ago, I picked up this rare paper charm. It's very precious to me. When it gets torn, this place goes up in smoke. Ah, that idiot Oni. What did you say, little one? Go on. Say it to my face. There! It's showtime! Oh, coming through! Step aside. Ito's back in town. You've had your fun. Now it's goodbye. Shut up, would ya? The transcendent and miraculous are not the only things to which human beings aspire. They pursue the everyday, the ordinary, to a far greater extent than I would have ever imagined.
This mountain we stand on is a cradle of life's profoundest mysteries, a vast and terrifying hotbed of possibilities. People are put off by the cold and don't realize that there is much to explore beneath the icy exterior. Are you here to build a snowman too? Let's combine our forces and build ourselves a huge snowman. It'll be a ton of fun. What's on your mind? You seem a little distracted. Some of my alchemy notes are missing. We do not yet know the identity of our thief. Please take care. Dragonspine has become more dangerous than it used to be. Oh no! Avalanche! Albedo, what the devil do you think you were doing? ये वाली क्वेस्ट बहुत अच्छी थी, मजा आया था. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project. The Jade Chamber belongs in the sky amongst the clouds. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. Deep down inside, I wish I could slow down time. I feel very fortunate to be right here, enjoying the fireworks, and enjoying the view of Liyue Harbor. Any excitement over second Naida quest? Naida की second quest अभी आई नहीं क्या? अभी एक ही आई है. So a devastation is your upcoming opera, right? It's the story of a girl becoming a hero. Perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. Transfiguration! Do your master's bidding! शेन्ना 2.4 में आई थी. मुझे ऐसा लगता है शेन्ना थोड़ी नया लॉन्च था. शेन्ना का 2.4 तो बहुत का पीछे है. अच्छा ये वो होता है जब एंकानो में रिलीज हुआ था. मैं पानी पी के आया. 1 मिनट. Rebuild the Jade Chamber? What? That's a huge project. The Jade Chamber belongs in the sky amongst the clouds.
Let the flames of redemption rain! From the ashes to this world anew. How brightly burns the truth! Hear the Inferno's call! Now is the time for my second coming! It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Wait! Joy, wait! If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. All of Inkanomiya is engulfed in a darkness that cannot be dispelled. There have also been reports of monsters. ये हाइड्रो वोर्टेक्स से दोबारा आ सकता है. आने को तो कुछ भी आ सकता है. जब पहली बार हार गया उसके बाद दोबारा आ गया तो तीसरी बार भी आ जाए, क्या पता. Of which no one has ever seen before. Strange monsters and an all-engulfing darkness. So you're here to help resolve this, What's with you joining forces with them? I would say this is a nice surprise, but it's really not that surprising. Inkanomiya is exceedingly dangerous right now. Here's hoping I have the chance. This tower seems to hear my wishes. There's darkness churning inside the Dainichi Mikoshi. Do not come any closer. Do you honestly have another choice? पहले वाला मार दिया था, दूसरे वाले में उसकी बीवी आई थी बदला लेने के लिए. जहाँ तक मुझे याद है. Cause of this enchantment. Your unrivaled power will be honored eternally. You're all right, little one. You look a little nervous. Now you've got my attention. Right now. Come on out. Is that all? I'm always watching. Good! With this power, no one shall be able to stand in my way! बस भाई वर्जन ट्रेलर जो है बीच के छूट के तो वो देख रहे हैं. पुरानी यादें ताज़ा हो रही She will no longer allow me to do with this body as I please. Something seems wrong with A. During my absence, I place everything in Miko's hands. But this means that... I'm placing my god in your capable hands. Please, bring her back. You wish to make yourself my enemy? How the heck? I am the everlasting Lord, the guardian of eternity. Inferior! Perish! Ruin follows my blade. Witness the final calamity! Wow, it's so beautiful here! So many things I've never seen before. Aren't you two even a little curious about what interesting things you might see at the festival? A signed first edition is going to become quite the collectible. I've got to get my hands on a copy. I've been here since... एक के पास इनगल्फिंग और एक के पास मिस स्प्लिटर. वो मिस स्प्लिटर नहीं है, वो यहाँ वाली सोर्ड है. last night so I could buy a figurine. Arataki knew
Numero Uno Ito challenge you to an all-out, no holds barred, anything goes duel. It fails to fulfill the most crucial element, inspiration. In that case, we'll need to order more dishes. Greetings. Ayaka has mentioned you on numerous occasions. Delighted to make your acquaintance. I am head of the Kamisato clan, Kamisato Ayata. Cascade! Mind the deluge. Everything's in place and they've taken the bait. Now to start reeling them in. मैंने जो बीच में गेम खेलनी बंद की थी ना, अगर तुम्हें जैसे बताया ना, मैंने बीच में गेम खेलनी बंद कर दी थी, तो एक टाइम था जब शायद मैंने यहाँ पे आकर गेम खेलनी स्टार्ट की थी दोबारा, आयातों के रिलीज़ के बाद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। मैंने बीच में बंद कर दिया था, इनाजुमा के लॉन्च के बाद ही मैंने बीच में बंद कर दी थी गेम खेलनी। If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. As the Helitrolls go in, they never emerge again. Everyone's driving themselves crazy worrying about it. Maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. A whole city that's floating in the air, upside down? More than one kind of strange power exists here, that it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. What's this? Conversation's over. Brace yourselves. Encumber us no more. Find a way to stop that thing! दिया की स्टोरी क्वेस्ट नहीं की, अभी नहीं की, अभी नहीं की दिया की स्टोरी क्वेस्ट। मुझे लगता है दिया की स्टोरी क्वेस्ट मैं कल ही करूँगा। My father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. I first met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Everything is chaotic here. If you stay here too long, this space may well devour you. Does that mean even Shao can't sense our presence here? Something seems to have been activated inside the Fantastic Compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Gotcha! Busted! Here comes the catch! Maybe I should make better use of my time. Our bond is strong! Stand with me! Lightning purified! फिलर क्वेस्ट नहीं था ये, वर्ल्ड क्वेस्ट था। फिलर क्वेस्ट तो क्या ही है सब, इसके अंदर वर्ल्ड क्वेस्ट है सारी। आपको बेसिकली स्टोरी अच्छे से समझनी है तो आपको ये सारी क्वेस्ट तो करनी पड़ेंगी। No, it's still alive. Why would you become like this? That sounds like Shao! Could he be in trouble? No way! Was that who I think it was? Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now! Get out of there! I lured you here to this underground space because I found your weakness. Die here with me.
ये वाला मैं ये वर्जन पे मैंने खेला नहीं था, पता नहीं क्यों। By the name of Kaedahara Kazuma. नहीं खेली है। He was called away earlier by some people from the Tenryou Commission. They said they had something important to discuss with him. Since the Vision Hunt decree has been repealed, I no longer have any grounds to officially arrest him. Then again, I guess something very interesting is about to happen. That's it. I'm taking this case over. Yeah! Fracture! Can't fool me! When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. रेसिंग गेम्स ठीक है, ऐसा कुछ रेसिंग गेम्स का क्रेज नहीं है मुझे। उनमें कोई अच्छा लगने या बुरा लगने की बात नहीं है, तो इतना खास क्रेज नहीं है रेसिंग गेम्स का, बट हाँ अच्छी लगती है। Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. Oh, right. Praise be to the Prinzessin, who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to ये वाला नहीं खेला था मैंने, ये नहीं खेली थी मैंने। you for inviting me to join you on पता नहीं this मैं क्या कर रहा था sacred इस क्वेस्ट के टाइम पे। Look at me, a genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. Lady Magistus, are you embarrassed? Stop calling me that weird name. Lady Majig... What? Oh, excellent, most excellent. Oh, official? That's enough. Come on, just play along. हाँ समर फैंटेशिया, ये वाला मैंने नहीं खेला था इवेंट। Yes, I did not play this event. Have you heard of Irminsul before? ये तो वर्जन, ये तो The सुमेरु का Dendro Archon is known as the God of Wisdom because her consciousness is directly connected to it. To the people of Sumeru, she's बेसिकली 2.8 का 3.0 आया था, 2.9 नहीं आया था, 1.6 के बाद सीधा 2.0 आया था। अब पता नहीं 3 के कितने वर्जन आएंगे। not only a symbol of wisdom, but also of power and kindness. Unfortunately, she disappeared in a great calamity a few hundred years ago. The sages later found the newly born Dendro Archon and whisked her back to Sumeru. It's Lesser Lord Kusanelli's birthday. Nilu's Dance of Subzerus is about to begin. The most important performance at the Subzerus Festival. The goddess of flowers began to dance. Countless beautiful Parisaras began to bloom wherever she stepped. Though we're just tiny people compared to the divine, we still have to do our best to make sure that the birthday girl feels loved on her special day. The stage is going to be even prettier when it's festival time. I can't wait for you to see it. Trainee Forest Ranger Caller reporting for duty. Hi! Fly! Fallen Amba! Help! The withering has been recorded in Sumeru for millennia. It's said that it originates from the depths of the world. I'm afraid we rangers will be battling the withering zones here for a long time. Many plants in the rainforest are already in decline. One with the forest! Let's nip that in the bud! It's called an Akasha Terminal. It's a tool produced by the Academia that utilizes the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. You may use an Akasha terminal to connect directly to the Akasha and भाई मुझे नहीं पता, इतना बड़ा एनिमे फैन है। हाँ यार क्यों नहीं, कैसे नहीं पता था, एनिमे तो मैं देखता हूँ, पर ये जो गेम मैं खेल रहा हूँ ना उस गेम के वर्जन के ट्रेलर है ये, मतलब अलग अलग वर्जन लॉन्च होता है उस गेम का, अपडेट आती है तो हर अपडेट का एक नया ट्रेलर आता है, तो वो देख रहा हूँ फिलहाल मैं। access any knowledge you need. The Divine Knowledge Capsule should be up for a secret auction within the next few days. Use it, and you'll gain the wisdom of the gods. I need you to find someone, a traveling merchant. What kind of products do you seek, my dear customers? Shazam! Here's the goods!
big outside of the city is being hidden on purpose. Mark my words, our god shall return. All will suffer retribution together. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Maybe they see Lesser Lord Kusanali's birth as confirmation of Greater Lord Rukkhadevata's death. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? This device, it's extracting energy from the ley line. It looks like he used the divine knowledge capsule. The Sub-Zero's festival. What? Go celebrate the birth of that god. What's happening? Oh, come on! Our Archon created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. It would be too risky to continue the Sub-Zero's festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. We don't have many more festivals to waste. Are you really so ignorant? Or are you just living in complete denial? The world forget. इस क्वेस्ट ने बड़ा दिमाग खराब किया था एक पॉइंट पे। इतनी टेढ़ी कहानी थी इस क्वेस्ट की, बहुत दिमाग खराब हुआ था इसको खेलने के बाद भी। बेसिकली सुमेरु के आने के बाद से ना सारी क्वेस्ट कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। सुमेरु की क्वेस्ट के बाद से पीछे जितनी क्वेस्ट सारी सीधी सादी थी, पता चल रहा था क्या हो रहा है। सुमेरु के बाद से तो ऐसा पता नहीं क्या ये च्यवनप्राश खा के आए हैं स्टोरी लिखने वाले। Welcome back, UTG game. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized it serves a more important purpose, keeping out people like us. We've waited a long time for this day to come. Fate has finally dealt me a hand to play against the Academia. Do you think the resurrection of the Scarlet King can स्टोरी तो उन्होंने नेटलाइन तक की ऑलरेडी लिखी हुई है। स्टोरी तो उन्होंने पूरी ऑलरेडी लिखी हुई है। थोड़ा बहुत ट्वीक करते रहते हैं स्टोरी के अंदर, कुछ नई चीज़ कर दी, कुछ रेटकॉन कर दिया, कुछ नया बना दिया, लेकिन इनको एक जनरल आइडिया है कि स्टोरी एक्चुअली में जा कहाँ रही है, वो इन्हें पता है। truly change Sumeru for the better? The resurrection of the Scarlet King will only result in war. And war serves no one. A shield is not enough to protect the most important things. That's why I must also wield a spear. Do your worst! Grant us your blessing! You've betrayed Aru village. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. लोग कितने हाइप पे साइन हो गए हैं। Through me, justice is served. If we're unhappy, we should speak up and let our voices be heard. I think canon is Lumine being evil. हाँ, normal canon के अंदर Lumine जो है वो Abyss के अंदर है। Positions. All eyes on me! Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago.
feelings of desperation are widespread. Traitors are what us followers of the Scarlet King despise the most. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia. Answer me this. Did the sages share any information about their project with you? We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. My experiment is a success. And now it seems they can no longer... देखो एक स्टोरी के अंदर उन्होंने दो कैरेक्टर ऑप्शन दिए हमें खेलने के लिए, लेकिन उनको भी तो एक कंसिस्टेंसी लेके चलनी पड़ेगी ना अपने इंटरनल स्टोरी राइटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर 10 राइटर हैं, 5 एथर से खेल रहे हैं, 5 लूमिन से खेल रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से कहानी बनाते रहेंगे। तो उनकी इंटरनल स्टोरी के लिए उनको एक रखना था इस तरीके से, लेकिन प्लेयर्स को उन्होंने ऑप्शन दिया है, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। longer hold back their sheer adoration. There is no need to fear. The pain will be brief. Your era is coming to an end. Oof. I am Mika, surveyor of the Reconnaissance Company. I will now be reading Grandmaster Varka's letter aloud for you all. Does this mean the Grandmaster knew Razor's parents? Fill up the barrels and store them away. Then wait for a windier day. Wax the bottles, seal them tight, for the south wind that soothes, for the north wind that bites. Final 36 हो गया। शाबाश। Dear Mika friends, second half में आएगा, yes. let us now open the wines. To the Animal Archon! ओह गॉड। गाइज मेरे ख्याल से मुझे अभी यहीं बंद करता हूँ मैं स्ट्रीम को, ठीक है? बाकी के बच्चे कुछ बाद में देखेंगे, ज़्यादा नहीं मुझे पता है, 1 2 3 4 हैं और यार, चलो देख के ख़त्म करते हैं। ये तो अभी रिसेंटली देखे हैं, ये तो रिसेंटली देखे, कल देखेंगे यार, कल देखेंगे। एक्चुअली क्या मशीन के अंदर मैंने स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले मशीन में कपड़े डालते धोने के लिए, उनको धुले हुए 2 घंटे हो गए, मशीन के अंदर पड़े हैं, वो भी निकाल के सुखाने हैं मुझे, ठीक है? घर में थोड़ी सी सफाई भी करनी है, ठीक है? तो रात को आते हैं खेलने के लिए। बाकी कोशिशें पूरी करता हूँ यार। रात के टाइम पता क्या होता है, सुबह से खांस के ना रात तक मेरा सर दर्द हो जाता है, मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करता बैठ के स्ट्रीम पे बैठने का। उस टाइम पे एनर्जी लो हो चुकी होती है सारी। उसका एक रीज़न ये भी, मेरा ना शेड्यूल जो है दिन का ना ख़राब हो गया है, काफ़ी ख़राब हो गया पिछले कुछ दिनों से। मैं लेट सो के उठ रहा हूँ, है ना, और लेट सो के उठने, और मैं अपनी वॉक पे जाता था, जिम जाता था, बीच में भी छूटा पड़ा, 1 महीने से मैं जिम नहीं गया, ठीक है? तो बिल्कुल ही मतलब कि ना शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया है। फिर ऊपर से बीच में तबीयत ख़राब हो गई, धीरे धीरे ना आई कम बैक टू शेड्यूल, तो धीरे धीरे होगा दोबारा से। चलो ठीक है यार, ठीक है, रात को मिलते हैं। ठीक है, रात को मिलते हैं, फिर बतियाते हैं, ठीक है? चलो यार, टेक केयर भाई। गॉड ऑफ वॉर प्लीज़। हाँ यार बिल्कुल, मैं गॉड ऑफ वॉर खेलूँगा, बिल्कुल खेलूँगा, मुझे भी खेलनी है, मेरा भी मन है। मैं भी सोच रहा हूँ स्टोरी आगे कहाँ जाएगी, मेरे भी दिमाग में क्लिफ हैंगर बना पड़ा है, ठीक है? तो रात को करेंगे, एक दिन का थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर शेड्यूल। फिर यार ब्रेक लेने का ये सीन है कि अभी 5 और 6 तारीख को शूट है मेरा, तो मेरा वो ब्रेक होगा ही होगा। और पीछे तबीयत ख़राब, और पीछे जो 4 दिन शूट हुआ, तो उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत सारे ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है? तो भी मैं ब्रेक लेना अफोर्ड नहीं कर सकता, भले कैसे भी खेलूँ, स्ट्रीम करूँ, लेकिन करूँगा ज़रूर मैं, ठीक है? चलो मिलते हैं कल रात को, सॉरी आज रात को या कल सुबह जो भी है। चलो गाइस, टेक केयर, बाय।
You can never